Hello everyone. So it's been a long time since I made a video, and it's sort of wrong on my part to not give you people updates. Uh, so this video is just a little bit of like I'll basically be sharing कि पिछले साल क्या हुआ with regards to investments in stocks, with regards to investments in crypto, with regards to the development that took place in Ethica, and moving forward 2023 में हम क्या देखते हैं कि how will the markets behave or Ethica Invest की तरफ से how we will be moving forward with our offerings. And I apologize for the very poor camera quality. मैं अपने webcam से बना रहा हूँ. I'll upgrade that soon. So just a quick update, for everyone. So 2022, to be very frank, was not a good year but Alhamdulillah, it wasn't a very good year in terms of price performance for stocks as well as for crypto. I'll cover more on stocks right now. So, the small cap index is down almost 20%, the Nifty small caps index. Mid cap is also down, large caps are up, and so equity did not perform very well in 2022 last year. उसकी वजह ये थी कि भाई 2019 से ऑलमोस्ट वी वर सीइंग एक्सट्रीमली गुड मार्केट्स और कोविड का जो क्रैश हुआ था उसके बाद मार्केट not only recovered very very quickly but it doubled almost, and a lot of the stocks did more than double. तो इतनी बड़ी रैली के बाद it's completely natural for stocks to move sideways or to sort of correct themselves. लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये कहूँगा कि ऑल्दो स्टॉक्स बहुत सारे करेक्ट हुए हैं, खासतौर पे जो स्मॉल कैप्स हैं उसमें 20 30 40% का भी करेक्शन आया है। लेकिन आप जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, खासतौर पे वो कंपनीज जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं एथिका इन्वेस्ट में फॉर आवर क्लाइंट्स, ऑल दो स्टॉक्स आर स्टिल परफॉर्मिंग in terms of revenue growth and in terms of profitability. So the revenue is still growing at a good pace. The profitability, the profits of the company, they are growing as well. Uske बावजूद the stocks are down, and that is simply because of the market forces. Simply because the market में एक widespread selling हुई है. So जो short term traders होते हैं who move the market for for periods shorter than 1 year, they are bearish, and they push the price down for that stock. But that is actually a good opportunity. For example, Dixon, a company hai that manufactures electronics for so many different electronic companies. तो मैं बस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, and Dixon is also in our portfolios, just as a disclaimer. So the क्या कहते हैं क्या कहते हैं Dixon का जो है, they are down a lot. I know that in terms of price, but what you need to know is in the last 12 months, their sales growth has increased by more than 40%. Okay. And their profit growth has been 24%. Iske बावजूद, the price is down 33%. So this is a good opportunity to buy more, for example. you know तो आपकी जो वैल्यू है फेयर वैल्यू बिजनेस की वो बढ़ी है, क्योंकि आपका सेल्स भी बढ़ा, आपकी प्रॉफिट भी बढ़ी, और आपका जो प्राइस है वो कम हो गया है। तो अगर कोई डिस्पैरिटी थी बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, तो वो अब एकदम कम हो गई है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, एंड आई एम नॉट स्पीकिंग स्पेसिफिकली फॉर डिक्सन, आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द स्टॉक्स जिनके साथ ये हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और प्राइस कम हुआ है। तो दे आर अवेलेबल एट मच लोअर पीईज, so you can maybe average down on a monthly basis into good companies. So 2023, today is 20th January 2023, I believe would be a year which might not see another crash of 20%, but it might also not see a very huge rally like what happened in 2021. We might just keep moving sideways for a while, or we might see better markets. हो सकता है बहुत अच्छे returns नहीं मिले, but I'm positive, I'm confident कि this year would give some returns to the equity holders. और जो मार्केट क्रैश हुआ है उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं उसके, देयर आर मेनी अदर रीजंस इंक्लूडिंग लिक्विडिटी. सो you need to understand कि equity is one asset class, the stock market is one asset class.
उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल पैसा है, पेंशन फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, हेज फंड्स का, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का, वो सिर्फ इक्विटी में नहीं जाता है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं जाता है, वो डेट में भी जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट डेट हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हों, ट्रेजरी नोट्स हो, गवर्नमेंट डेट हो, सॉवरेन बॉन्ड्स हों, इनमें ज़्यादा जाएगा अब पैसा, और जा रहा है। उसकी वजह ये है कि because of inflation, the Fed has increased, the Federal Reserve has increased its interest rates, right? And basically, you are getting more money without any risk. You're getting more money because equity में risk है, right? And the US Treasury is considered risk free because the government can simply print more money to pay you, right? तो जब आपको रिस्क फ्री ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो इक्विटी फिर उतनी लुक्रेटिव नहीं रहती। इक्विटी में, यानी इक्विटी मतलब स्टॉक्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना फिर उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहता, राइट? तो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस फिर अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो स्टॉक्स से कम करके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ा देते हैं। और जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इक्विटी से निकालते हैं डेट में डालने के लिए, तो मनी लीव्स इक्विटी मार्केट्स, राइट? उसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज है उनका पीई, उनका वैल्यूएशन जो है वो कम होता है, हो जाता है। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी है जिसका वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट द वे इट इज। एंड दीज थिंग्स आर टेम्पररी। आज पैसा इक्विटी से डेट में गया है, कल पैसा वापस डेट से इक्विटी में आ जाएगा, फिर डेट में चला जाएगा, फिर इक्विटी में आ जाएगा। ये सारी चीजें होती रहती हैं। बट जो हमारा क्या कहते हैं, जो सक्सेस है of any investor, that is basically डिपेंडेंट ऑन आप कितनी अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? दैट इज ऑल दैट मैटर्स, कि आप कितनी अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू इन्वेस्टेड इन लेट्स से कोका कोला 50 years ago, और इफ यू इन्वेस्टेड इन एप्पल 30 years ago, और 25 years ago जब भी उनका आईपीओ हुआ था, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, तो उस 20 30 40 50 साल में इतनी सारी चीजें हुई। इफ यू इन्वेस्ट इन लेट्स से द इंडेक्स S&P 500 इंडेक्स ओवर द लास्ट 100 years, उसमें वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वियतनाम वॉर हुई, और मिडल ईस्ट इसराइल के बीच की जो ग्रेट वॉर थी वो हुई, ब्रेटन वुड्स हुआ, वी वेंट ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड्स, दुनिया भर की चीजें हुई। उसके बावजूद equity outperformed debt, equity outperformed gold, equity outperformed every other asset class, right? So there will be periods where equity will not perform क्योंकि macroeconomic factors उनके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स ग्रो कर रही है, तो आप उसके प्राइसेस कब तक सप्रेस करके रख सकते हैं? ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते, मे बी अ फ्यू इयर्स मैक्सिमम। बट इफ दैट कंपनी इज, आज कोई कंपनी 10 रुपए बना रही है, और बढ़ते बढ़ते आज से 5 साल बाद वो कंपनी 10 रुपए बनाने के बजाय 10,000 रुपए बना रही है, तो you cannot suppress its price. It will grow. The price will shoot up to match its value, and that is what value investing is all about. So anyway, that was a brief outlook that I wanted to give on the markets. I see some people are joining now, so they can just go back and watch from the beginning. So we just gave a brief overview of what we think of the markets. A little bit of update on Ethica. I don't want to prolong this video long, so inshallah we'll be launching a new website soon. We'll be launching a new portfolio soon. We have partnered with a new investment advisor, SEBI registered investment advisor. So he'll be working with Ethica. So that is coming as well. So stay tuned, and inshallah, I'll keep making regular videos to keep you guys updated on the state of the market, how you should be investing, what you should be doing. And yeah, so thanks for that. Assalamu alaikum.